And the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, Yes, yes. then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. It can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred in the Yes. preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be done. So I It's not valid. agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to My lord, explain. even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution. Fair enough, that's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I'm not for a moment saying that that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So आपका जो point है ना, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my little brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that. Yes, yes. So, Can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? another one, my lord. This is the first one. This is the first one that directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say, no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it, pehli baat. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court, yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of England, and the equity varies with the Chancellor's foot? So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No, not at all. How will you resolve this? My lord. Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do. Is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being,
I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Not tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. And like I said, I'm much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered. We could just hear cases only twice a day and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever. And we could have a vacation for 6 months, or things like this. So we're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example on? Can the parliament say that your lordships will work 24/7, 365? जवाब दे दें हम हमारे conundrum का फिर आप confuse हो जाएंगे Before you भंडारी reply to these questions, Sorry. let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation, yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. If you You can't touch me till I retire. Mr. Bhandari, the late Donald Rumsfeld said something very helpful. He said, we'll jump off that bridge when we come to it. We will deal with such autocracy when your lordship turns it. Precisely, we'll deal with such a law when it sort of takes away our power. If it enhances our power and it makes more transparency, we will not touch it. We'll touch it when it takes away our powers or makes things more. My lord, Mr. Bhandari, do we also have in this, do we also have? Sorry. Mr. Bhandari, Do we also have something? may I ask a something question, called, please? Just a minute, madam. Do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, and these are hypothetical examples being given, so my question is also hypothetical. And how effective has been the Supreme Judicial Council? I don't think if I don't call a full court meeting, the something matter that, can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch may misconduct to that extent. Let me, My lord, the moment your lordship thinks let of me turning that ask a question, please. My lord, everyone here will I think we. Let me she's ask a been very question, quiet. please. मैंने डिस्टर्ब कर देना सबको, मुझे भी इजाजत दी जाए. बस I sit here quiet. Sir, it says that the Act 2003, it says that whereas the Article 199 of the 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, which law the Act is referring to, which law the Constitution is pointing finger to? Was there any law at that time? No act. Because the rules were framed, notified in 1980, and has been made in 2023. So That's your which law they were referring to? They were not at that time. Because I think the constitutional amendment has been made by unconstitutional means. शक्ल बदल गई है constitution. Quite possible, but this Article 199, your lordship uses the word law. Law can include ordinances, rules. It will include the previous Supreme Court rules also, because the previous Supreme Court rules were framed in 1956. And they, under Article 268, continue as existing law. So they were also law. And they continued till they were changed and repealed in 1980 by the present rules. So at that point in time, there was no law which actually limited the power of the... Guidance for making rules. It could be. But as I said, maybe... on my reading of entry 55, there may be some law which can provide for these practices and procedures within very narrow limits.
but subject to the overarching constitutional principle that nothing can be done in that law that impinges upon the independence of judiciary. And the Baz Mohammed Kakad case is squarely applicable there. There the power of the Chief Justice to constitute benches was impinged upon and it was struck down. Mr. Bandari, this court can revisit its own judgment by larger bench. So is it not equal to the appeal? You are overruling the judgment of 3-member bench by 5-member bench. So it is not sort of appeal. No, my lord. And the law, which according to you is a judge law, whether judge law cannot be managed through rules or through enactment. My lord, there are twofold answer to that. My lord, appeal is different because appeal determines rights between the parties themselves. It sort of does away with the concept of res judicata. If there is no appeal, the judgment becomes final, the rights are determined and res judicata applies. If you take the matter into appeal, So it means that you are against the right of appeal provided to the general public. Say the Supreme Court can exercise that right, but the general public cannot. No, I'm not saying that. I'm saying your power, your lordship's power to overrule previous precedent will not disturb the rights of the parties. The rights are determined. Your overruling is only on a point of law. You will declare the law, you will overrule a previous judgment. The Doso case was overruled in Asma Jilani and in Sindh High Court Bar, all the previous validating judgments were overruled. The rights of the parties are not affected. If this power is structured, what effect it will have? Well, because the difference is, once the judgment becomes final, even if the judgment is wrong, and even if it is later overruled in a subsequent case, the rights of the parties become final under the judgment. That's the doctrine of res judicata. What your lordship is alluding to is the doctrine of stare decisis. A larger bench can overrule the law declared by an earlier bench, but it cannot upset the rights that have been determined inter partes. Even the legislature can't do that. Even the legislature cannot undo the judgment, can declare a judgment of the court to be of no effect. The legislature can change the law for the future. It can take away the basis for the judgment, but it cannot simply say this is what they did in the NRO case. In NRO, they declared certain judgments to be void simpliciter, and that was struck down in Mubashir Hassan's case. By overruling our judgment, we ourselves consider that that judgment was wrong. Yes. Therefore, there must be something to revisit it. Yes, my lord. The Parliament said, okay, do it in proper manner through the Act of Parliament. Well, but that's a question of appeal. Appeal is different. Appeal is that the dispute is between A and B. A and B has rights have been determined in the original proceedings, and then they go up in appeal, and those rights are redetermined by the appellate court. The overruling doesn't take place on that basis. Overruling takes place on the basis that the earlier judgment declared the law incorrectly, and the law is now being rectified. So the rights of the parties, even res judicata applies even if the judgment which determined the rights is wrong. It will amount to discrimination. For once, at one time, the Supreme Court says this is wrong. On the other hand, Supreme Court said no, this is right. My lord, but then that raises the problem of finality of judgments, because we are dealing with a human institution which is the court system. You have to have finality of judgments, finality of cases. Otherwise, why not have a second appeal then? Why not have a third appeal then? Problem, my lord, your lordship quoted this in Mr. Uzair Bandari, I must compliment you on 2 counts. My lord. One, your extreme patience and good humor to address very different questions from all sides of the bench. And the second is your thorough being fully prepared in this case. I'm grateful. Do you want to add anything? My because our questions will never stop. I must draw. If you want to add something. Yes, my lord, let me allow me to address the question. It's always a pleasure to hear someone who is articulate. There are cobwebs in our minds as well to clear them up. My lord. But then we are taking away from your submissions. You want to add something? My lord, I'll just ask for 10 minutes to address the question of appeal. Counsel, just one last question. My lord. You represent a very, it's a political party. Maybe tomorrow it is in majority in the parliament. From your arguments,
what I've gathered is that you actually do not repose your confidence in the parliament. What you have said is, as I've understood, that this is a very good law, but in future the parliament may make a law which may have effect on the independence of judiciary. There is no fundamental right that the political party is, argued that is enforcing. They say it's a good law, it should happen, but their apprehensions have been expressed against the parliament. So, do you think it's a matter which should have, in the first place, been taken up under Article 184(3)? Because everyone, and kindly if you can cite any example in any jurisdiction where a good law, a law that actually ensures access to justice, may have been struck down by any court. Well, Lord, I'll do that. The Indian Supreme Court did that in the Advocate on Records case, 2016, Volume 1, 2016, Volume 1, SCC, Volume 5, SCC, page 1. Their National Judicial Appointment Commission had been reconstituted by the 99th Amendment of the Constitution. They put in experts from the public to help and to sort of advise in the process of appointment of judges. That law was struck down by the Indian Supreme Court. A constitutional amendment was struck down because it violated the independence of judiciary, even though, and this is most critical, and I'll... Learned Counsel, Learned Counsel, here in this case, it is actually promoting and advancing the independence of judiciary. It is not. My lord, I am not for a moment conceding that this is a good law. As a political party, it is not a good law. This is your stance. My lord, it is not my stance, and I am not conceding that it is a good law. It is half-baked. It creates more problems than it solves. It's being dressed up as a good law. For example, if your lordship actually decides to turn the autocrat that your lordship just said we were, where is the provision in this act which says that how will the cases be fixed? Section 2 simply says the committee will constitute benches and allocate to them. What if your lordship decides that despite that allocation, I am not going to fix any case? We can frame the rules. We can frame the rules for that. ये देखिए वो मेरे दोनों तरफ दो फरिश्ते जो बैठे हैं वो मुझ पे नजर रखेंगे, आप फिक्र ना करिए। इधर और भंडारी साहब एक कमिटमेंट तो आप फिर कर ही रहे हैं ना आज कि जब आप की पॉलिटिकल पार्टी अगर कल इलेक्शन जीत जाती है तो पहला बिल आप पार्लियामेंट में इसको रिपील करने का डालें। माय लॉर्ड, मैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। अब इतना बुरा कानून है, फौरन रिपील करवा लीजिएगा। हम फिर पुराने उस पे चले जाएंगे। ये आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये तो अजीब बात है। इतना बुरा कानून है मगर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा। नहीं, हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर दे। शायद आपको सूट करे, अगर अपील दे दें इसको तो शायद सूट करे, इसलिए मैं तो देखिए ये बात असूली बात है। क्या होगा जी वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई भी नहीं कह सकता। चलिए अब एक लेट्स वाइंड इट अप। मैं सर ये जो मैं आपको my lord the judgment I referred in para 990 of that judgment there is very detailed discussion on how the collegium system in India has totally destroyed matters. There your lordship know in India the power of appointing and recommending judges for appointment does not vest in the chief justice, it vests in the collegium of 5 judges, and this para 990 at page 689 deals with the problems that the collegium system caused. And that goes on and on. Favoritism, nepotism, abuse of power. But they nonetheless said we are not letting the parliament. Judicial Commission and Parliamentary Committee भी तो collegium ही चल रहा है ना, तो वो against the independence of judiciary नहीं है Parliamentary Committee। नहीं, वो आपने uphold कर, मैं बात और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो my lord ने सवाल पूछा था कि इधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं collegium system में, हम बाहर फिक्स नहीं करने देंगे। My lord with respect, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स जो आपके जुरिस्डिक्शन में है वो बाहर वालों को सॉल्व करने देंगे, फॉर मी दैट ब्रिंग्स बैक सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। हर मार्शल लॉ भी इसी बेसिस पे लगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस। मार्शल लॉ लगा देते हैं, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर जजेस इन द कॉलेजियम। तो ये बाहर वाला कौन है यहाँ पे? इधर सर, यहाँ पे अगर कमेटी है तो बाहर से कौन आ रहा है? सर मैं और बात कर रहा हूँ।
कॉलेजियम सिस्टम अच्छा नहीं होता ये है, बताइए, उसमें नुकसान होता है। as a political party, do you support the powers vested in the Chief Justice and not in 3 judges? No. I'm saying it should be maybe more than 3 judges. No, But Learned Counsel, I'm more than not in Leena. favor. I'm not saying that the No, Chief Learned Justice Counsel, should be you have to be very clear. Bhandari Sahab, Do you support the 170 previous system where the Chief Justice had absolute discretion? I don't support that. So it's a good law. It is not. Secondly, It is not. My lord, I don't concede it's a good law. Bhandari Sahab, Because from this extreme, you don't necessarily go to that extreme. You go step by step. Counsel, that Bhandari is, Sahab. you are questioning the wisdom of the parliament as a political party. Tomorrow, your client would be in the parliament. If tomorrow they do take my advice before enacting law, I will advise them to enact a better law than this. This for me is not a good law. भंडारी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें है चीफ जस्टिस एंड जजेस। सब जजेस जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे द लॉ कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। बाज मोहम्मद काकड़ केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि स्टैट्यूट के थ्रू चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को चेंज करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मेरी तो सबमिशन ही ये है, मैं बिल्कुल एक मुतलक चीफ जस्टिस के हक में नहीं हूं। भंडारी, चीफ जस्टिस के पावर कहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन? कई जगह है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह बता दे। नहीं वो सर जैसे 140s में कि चीफ जस्टिस आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। As far as the working of the Supreme Court and the constitution of the benches, The subject matter of this act, my lord is asking, yes, of course, the Chief Justice powers are mentioned in various provisions. Regarding the subject matter of this case, is there anything can be utilized? Not except the constitutional convention, that appointment of that constitution of benches is your prerogative. You see, 191 में इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कमिटीज, रिव्यू, रिविजन्स, व्हाटएवर, उसके जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाए, एंड अ फुल कोर्ट इन 1980 डिड मेक दोज रूल्स, और उससे पहले भी रूल्स बने थे जो आई मीन व्हिच फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड। वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी गई। सो लेट्स मूव ऑन टू द अपील बिट। My lord, the appeal, and I'll try it. My lord, there is one direct precedent which deals with the question of appeal and such similar matters, which is Sabir Shah's case, PLD 1995, Supreme Court 66. Now what happened in that दोबारा case? बताइए, PLD 1995, Supreme Court, page 66. Now, my lord, what had happened? ये दिखाइए जी किताब। What's the contention? PLD 1995. Contention क्या आपकी? जी मेरी इस केस में ये था, the Political Parties Act was amended, and in the case of defection, the power was conferred, power of adjudication was conferred on the Election Commission in terms of Article 63(2). And appeal against that order of the Election Commission was provided direct to the Supreme Court. And that appeal was struck down by this Honorable Court in this case by saying that where the original forum, Article 63(2), is created by the Constitution itself, then an appeal, and the Constitution does not provide a further remedy, then an appeal against that cannot be provided by ordinary legislation. ये कौन सा पैराग्राफ है? This is, first of all, this is Justice Sajjad Ali Shah, his lordship as then was the Chief Justice. He wrote for the majority. There were some dissents also. This is para 14 at page 99.
What was the reason given for it? Because the sub-constitutional legislation cannot in effect amend a constitutional provision. Did they discuss 55? They did not. There's no discussion of 55 here. Para 14 padhiye zara. Para 14, I read the first 4 lines. Determination of question of forum. Isse pehle, Your Lordship may kindly see page 105, where the provision in question is reproduced. 105. Ji. If a member of a house. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी तो 55 की और किसकी डिस्कशन की? 41 की, बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड था, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 40 एंट्री 41 से आया था. If a member of a house having been elected as such, a candidate or nominee of political party, or having been elected as such otherwise than as a candidate or nominee of a political party, and having become a member of a political party after such election, defects or withdraws himself from the political party, he shall from the date of such defection or withdrawal be disqualified from being a member of the House for the unexpired period of his term as such member, unless he has been re-elected at a by-election held after his disqualification. 2. If any question arises whether a member of a House has become disqualified under subsection 1 from being a member, the question shall, on a reference by the leader of the parliamentary concerned, be determined by the Election Commission. 3. An appeal against a decision of the Election Commission under subsection 2 shall lie to the Supreme Court within 30 days of the decision. So this, then Your Lordship may kindly... Entry 41 में तो कोई बार नहीं था, उनको तो 55 में ही देखना चाहिए था. 55 इसमें डिस्कस नहीं. So 41 में क्या प्रॉब्लम? 41 तो इलेक्शन से डील करता था, तो आप क्या तो आर्गुमेंट है कि उसको डील करते हुए you can provide all the appeals and everything. नहीं, but मैं ये कंपटीशन का यहाँ पे और बात आ गई. मैं यहाँ पे तो ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जैसे कि इलेक्शन 63(2) में है या 184(3) में है, उसके खिलाफ आपको अगर अपील देनी है तो वो तो एक्सप्रेस आपको पावर चाहिए बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. 184(3) में भी नहीं है और उन्होंने कहा जी 63(2) में भी नहीं है, तो वो तो उस 55 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि एक्सप्रेस ऑथराइजेशन ही नहीं है. अनलाइक रीडिंग के मुताबिक इन माय हम्बल सबमिशन 2043 इज डिफरेंट. वहां पे और कहा कि 41 में पावर नहीं है. नहीं, उन्होंने तो ये पढ़ लेते हैं. उन्होंने ये कहा है कि जी वो फोरम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही फोरम दिया है और उसके खिलाफ रेमेडी नहीं दी तो फिर आप उसके खिलाफ रेमेडी थ्रू सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं दे सकते. ऐसी बस कह दिया. I think that's, I mean, you can't amend the constitution. Anything more? Or ordinary legislation. Anything more? दूसरा फिर इस पे आप देख ले सर, पैरा 34, Justice Fazal Kareem's opinion at 259. इसी केस में. इसी केस में. And then the discussion by in para 34 page 34, then 40 to 43. Sabir Shah case है ना? Sabir Shah case. This is the separate opinion who agreed by Justice Fazal Kareem. Para 30. Para 34. हाँ. And then 40 to 42. 40 to 42. To 42. At 262 to 263. Khatam? This is Justice Fazal Kareem. Then, my lord, just a couple of more things. My lord, the other judgment in which your lordships have held that an appeal directly, this is the Review Act judgment in which your lordships have held that the review that was, power of review that was given was in effect an appeal, and no appeal could be provided in 184(3) through a sub-constitutional legislation. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. I've already mentioned this. My lord, then very quickly, just, my lord, your lordship have also seen that this appeal provision, apart from the fact that 184(3) does not contemplate an appeal, your lordship will see that section 5 subsection 2 says the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the Constitution prior to the commencement of the act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this act. So the right of appeal is being treated retrospectively, and there is no starting point mentioned for this right. So, according to my knowledge, the first case under 184(3) was Manzoor Elai's case. So technically, an appeal can be filed against in that also. Any number of cases, all the cases that
of suo motu jurisdiction. Your lordships will be inundated by thousands of appeals because of this. So this is the floodgates argument. My lord, केस कौन से सन मंजूरी लाई केस कौन से ईयर है मंजूरी लाई 75 Supreme Court. 75 और कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दे सकते, रिट्रोस्पेक्टिवली अपील की रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। की जा सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अलाइव हो तो उसकी लिमिटेशन आप कर सकते हैं। जो जजमेंट्स पास्ट एंड क्लोज्ड और फाइनल हो गई हों उनको आप रीओपन नहीं कर सकते। ये दो चीजें जी, ये जो रिव्यू वाली जजमेंट पे भी जी ये पैरास 55 और 56 में डील किया गया। And then, my lord, there is a US Supreme Court judgment which is squarely on point. This is Plout versus Spendthrift Farm. This is 131, Lawyers Edition 2nd, 328. This is exactly on point, where judgments of lower courts had become final, appeals had become barred, and much later, there was a law which said that all of those cases could be reinstated within a certain period of the promulgation of the act. And the US Supreme Court struck it down as something which impinged on the separation of powers and judicial power. So this is something for your... You have argued on the point of the appeal and the substantive right, but what about on the point of practice and procedure, and whether the word law gives competence to Parliament read with entry 58? आपने उस पर नहीं बताया what your thoughts are. My submission, Entry 58 के ऊपर what do you say on entry 58? No, the power to make law on practice and procedure does not confer any power to create an appeal which has been settled, which it is settled law is a substantive right. No, whether Parliament can make law on practice and procedure. That was the question that has been left unattended so far. No, in my humble opinion, on the subject of practice and procedure per se, Parliament cannot. Cannot. Parliament can make laws on other subjects if it is empowered under the body of the Constitution, and then in that limited area, it can provide practice and procedure. So your answer to both questions is that Parliament cannot make law with respect to creating this right of appeal through ordinary legislation. It would be a constitutional amendment, if at all, and secondly, practice and procedure पे भी law नहीं। जी। आप ये बताते हैं वो कौन से मामला हैं? चीज रह गई है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा तो खत्म कर लें। खत्म करेंगे। वो कौन से मामला हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है? या तो हमने कह दिया नहीं कर सकती, तो वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये मैटर इसमें तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और इस मैटर में पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। माय लॉर्ड, ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ नहीं बना सकती इज नॉट करेक्ट। पार्लियामेंट जिन चीजों पे भी लॉ बनाती है वो अल्टीमेटली एज द एपेक्स कोर्ट आप उससे डील करते हैं। अगर बना सकती है क्या हर्ज है कि वो सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कंट्रोल ना करे? नहीं, वो कंट्रोल थ्रू द जजेस, नॉट थ्रू द पार्लियामेंट। सर जब देखिए पार्लियामेंट जो भी कर सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रह के कर सकती है। जहां पार्लियामेंट ने खास कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेसिफिक पावर देनी थी वो दे दी। अब ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फर्दर उसमें कुछ करें, दैट कैन बी डन, बट अभी तो वी ऑल हैव टू ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Every law that is enacted in this country, be it provincial, be it local, be it federal, your lordships have jurisdiction over it. Your lordships are the apex court. A matter relating to company law comes before my lord. A matter relating to property tax in any province comes before my lord. As the apex court, all that laws are laws that your lordships deal with. Not that the Supreme Court is being cut out. Here, the problem is that that an external agency is coming in and telling you what to do and how to do. That's the problem. An external agency, and this is what the Indian Supreme Court said. Let's not denigrate Parliament by calling it external agency. Let's call it by the Supreme Court. External to the Supreme Court, only in that sense. Because जो चलिए आप अपना conclude करें। एक चीज मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। मैं पहले एक कन्फेशन कर लूँ। जो अभी मैंने आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी है, मेरे एक यंग कॉलीग है शहरियार रियाज के नाम से, ये मुझे उन्होंने बताई थी
and I'm grateful to him. मेरी रिसर्च में ये नहीं आई थी, मेरे यंग कॉलीग ने दी, मेरे कॉलीग ने बाद में निकाली थी, so I just want to acknowledge आप that. ऐसा कीजिएगा, आप उनकी तनख्वाह फौरन बढ़ा दीजिएगा। सर वो मेरे लिए काम नहीं करते। नहीं ये फिर आप उनको पैसे दे दीजिए, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, हमें ये बात ना बताएं। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक्नॉलेज करना चाह रहा था। द फाइनल पॉइंट जो मैं इस पे करना चाह रहा हूँ, नहीं ऐसे सूखा एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा। क्या सर? मेहनत भी करें, आप कह रहे हैं बस एक्नॉलेज कर लिया, चलो भाई तुम्हारे एक्नॉलेज कर लिया, नहीं, अब तो आपने एक्नॉलेज कर लिया तो आप उसको बाकायदा पैसे दीजिएगा इतनी मेहनत के। सर मैं दे दूंगा, मैं आई एग्री, आई विल बी मोर देन हैप्पी। डन सर, डन। Final point, and this is the point that my Lord Justice Mandokhel raised on the last hearing and even today. How is an ICA competent in terms of Article 199? Why doesn't the same principle apply there? My Lord, an intra-court appeal has a very interesting history. I've dealt with it at pages 15 to 18 of the concise statement that I filed yesterday, CMA 8351. But if I can very quickly just sort of Lord, I'm sorry to interrupt. With your lordship permission, we have filed concise statement. नहीं ये बात कर लें। Just with your lordship. I have to leave for Lahore. माइक में बोलने। Lord, I have to leave for Lahore. I have given the statement. हमें बहुत खुशी हो रही है। आपको इजाजत है, फाइल कर दीजिएगा। थैंक यू। Well, the origin of the intra-court appeal is in the letters patent of the Lahore High Court, which were framed in 1919. Now, in the letters patent, clause 10 allowed for. ये आपने बात तहरीर कर दी है। जी कर दी है। तो अब काफी वक्त हो रहा है, हम पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, आप pages 15 to 18 में सिर्फ ये। आप फिक्र ना करें, आपका हर लफ्ज मैं तो पढ़ूंगा, कम से कम मैं ऐड कर देता हूँ आपके। I'll be very grateful. आपसे आखिरी जब हो जाए फिर मैं सवाल करना चाहूँगा। आखिरी एक क्वेश्चन उसी के बारे में मजीद कर रहा हूँ। आपने ये जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत इंटर कोर्ट अपील दी गई, लेकिन आर्टिकल 199 में यही बात है कि नो ऑर्डर कैन बी पास अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो एक तरफ तो हाई कोर्ट अपील सिंगल जज ऑर्डर करता है, डिविजनल बेंच बैठ के उसके ऑर्डर को सेटिस्फाइड या अपहेल्ड करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट। क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 199 starts off by saying it is subject to the constitution. So 199 is subject to the constitution. The constitution itself saves the law reform ordinance in article 268. Said 199 said no order can be passed against the judgment of the high court. No, my lord, but it is subject to the constitution itself. So the constitution saves the relevant laws, saves the letters patent as well as the law reforms ordinance, and then article 275, because law reforms ordinance came about in 1972 when there was no constitution. You mean that the appellate forum provided by the statute in respect of constitutional provision in High Court is correct, but here in Supreme Court is not? No, my lord, it is not. It is not as simple as that, because the very constituent document of the High Court. I think you've stated. Have you concluded or no? I think. Have you? Learned Counsel, you've very aptly explained your submissions in your written submissions. I've gone through them. I think when my brothers, colleagues, they find time, they read it, I think they'll understand. ठीक है, मैं बिल्कुल जी मैं इसी तरह उसमें जो statutory appeals जो my Lord Justice Mansoor Ali Shah. नहीं, मगर हमने आपकी इतनी तारीफ करी, आप हमारी थोड़ी तारीफ कर देंगे। इतना पेशेंटली सुन रहे हैं आपको। सर आपने इतना पेशेंटली सुना है कि मेरी तो टांगें थक गई हैं। खड़े होके आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छी बात है, हल्की फुल्की तरीके से थोड़ा लाइट भी रहना चाहिए माहौल। बिल्कुल होना चाहिए थी। मैं सिर्फ लास्ट ये बात करके आई विल फिनिश। जितनी भी सर स्टैट्यूटरी अपील्स एटलीस्ट मुझे मिली हैं, वो सब की सब जस्टिफाइड और बेसिस पे एक्सेप्ट द कंपटीशन एक्ट। फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल्स एक्ट में अपील है टू द सुप्रीम कोर्ट। ना वो एक्ट उसमें भी अपील है, उसमें भी है, सेक्शंस 48 में है, 50 में है। डिसिप्लिनरी कमिटी के ऊपर जी सुप्रीम कोर्ट है। जी सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा वहां पे इसलिए है, देखिए आपसे हमेशा कुछ नई चीज सीखते हैं सर। वहां पे इसलिए है कि वो उस 1973 में आया था जब 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट कर रहा था, और 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 188 था जो कहता था सच अदर जुरिस्डिक्शन एज मे बी कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय लॉ। तो वो उस बेसिस पे जस्टिफाइड है। प्रोटेक्ट हो गया फिर।
जी प्रोटेक्ट हो गया। वो और फिर वो बाद में वो sort of 268 और 275 के थ्रू वो चलता रहा। फिर सर दो है, एक तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और मोतसिब ऑर्डर 1983। इन दोनों में अपील टू दी कंपनीज ऑर्डिनेंस तो रिपील हो गया, बट टू दी when it was alive or extant, it provided an appeal. Now both these laws were made when the constitution was in abeyance in 1983 and 84, and in fact if you are not कितने आराम से ये बात कर देते हैं when the constitution was in abeyance. नहीं सॉरी, देखिए ये हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी इन अबेयंस, फुल स्टॉप। आई होप सो। तो अगर कोई ये कह भी दे उससे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेयंस हो गया, माशाल्लाह। एक नई इस पे हमने बहस शुरू कर देंगे, लेक्स पॉपुला है। नहीं अब मैं आपको सवाल आखिरी अब खत्म करने पे मैं एक सवाल मैं बस एक और मेरा रह गया जी। सो ये दोनों जो लॉज हैं जी, ये तो they were framed when the martial law was in field. Again वो फिर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर 270A में वो सेव हो गए। फिर कंपनीज एक्ट 2017, actually the provision that it provides only for a petition for leave to appeal, and I don't see what sense it makes, because petition for leave to appeal to in any event has to be determined by the constitution. Then is the Elections Act. Election Act section 155 provides an appeal to this court against orders and judgments of the election tribunal. Now again, I'm not defending it. All I'm saying is that may be justified on the basis of Article 225, which is similar to or can be read similarly to Article 6.3. It allows for the creation of a separate regime outside the normal courts, and hence it can be justified on that basis. My Lord, Competition Act, even though I will not, as my Lord the Chief Justice said, because it's a sub judice matter, it's better you made your point, ठीक है जी। उसमें सिर्फ ये कि वहाँ तो there is the appeal to the Supreme Court is not even against an order of the High Court. It's an appeal against a competition appellate tribunal. So एक ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया और उसके ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपील दे दी गई है, बट वो फिर इन एन अप्रोप्रिएट केस आप देख लेंगे। माय लॉर्ड, द फाइनल पॉइंट ऑन दिस, इवन इफ योर लॉर्डशिप आर इंक्लाइंड to sustain the law. A question was posed, I think, by my lord on the previous hearing. What will happen to all the benches and all the amendments that have been passed? My lord, in that eventuality, my submission would be that your lordships should or to invoke the doctrine of de facto, as was done in the case of Meher Ali. PLD 1990. As was done in the case of 1998 Supreme Court. 1998 Supreme Court. 1445. PLD 1998 1445। ये किसका केस है? दिस इज मेहरम अली वर्सेस मेहरम अली, या ओके जी। उसमें मैंने होल्ड ये किया इस कोर्ट ने कि जी लॉ गलत था, उसके तहत ट्राइब्यूनल्स गलत बने, लेकिन जो कुछ हो गया अंडर द कवर ऑफ अ लॉ हुआ, तो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी जो कुछ हुआ वो अंडर द कवर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हुआ, देयरफॉर एवरीथिंग ऑट टू बी सेव्ड। माय लॉर्ड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। भंडारी साहब, उसमें तो पीनल कॉन्सिक्वेंस थे, इसलिए उसमें ये कहा गया था। जी जी, इसे अली वाले केस सेव कर लिया हुई थी ना? जी जी जी, तो सजाएं थी वो उन्होंने कर ली। थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम एक्सट्रीमली। आपकी साइड से सब लोग खत्म हो गए ना? माय लॉर्ड, हाँ मेरा एक पिटीशन है माय लॉर्ड। अच्छा एक सेकंड भंडारी साहब जाइए, नहीं मेरा सवाल था वो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते। देखिए आप हमें अमेरिका ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, जरा आइन जरा खोल लीजिए, पहला सफा पढ़ लीजिए उसका। पहला सफा, पहली इबारत इसकी पढ़िए, शुरू कीजिए। इससे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, in the name of Allah, the beneficent and the merciful. Preamble. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. इसका उर्दू तर्जुमा आप कर सकेंगे या मैं कर दूं आपके लिए? सर, हाकमियत आला अल्लाह ताला में है, पूरी कायनात पर तन्हा अल्लाह ताला ही की हाकिमियत और उसका तफवीज़ करदा इख्तियार एक मुकद्दस अमानत मुकद्दस अमानत है। मुकद्दस अमानत। अब आर्टिकल 2 जरा पढ़ लीजिए। इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 2A पढ़ लीजिए। जी। 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution in the annex
are hereby made substantive part of the Constitution and shall have effect accordingly. पहला सवाल आपसे, क्या कुरान शरीफ से हिकमत ले सकते हैं ये फैसला करने के लिए या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। तो कुरान शरीफ में कोई ऐसी आपके ख्याल में कोई है जगह जहाँ के मुशावरत की बात की गई हो? My Lord, I will not. मैं आपको मदद कर देता हूँ। सूरह आले इमरान में जो 3rd सूरह ऑफ द होली कुरान 159 वर्स में ये स्पेसिफिकली है कि आप मुशावरत से काम कीजिए, और यही बात दोबारा फिर कही गई है सूरह नहीं ये हो गया, ये है सूरह शूरा में 48 वर्स में कि अब अंग्रेजी में इन म्यूचुअल कंसल्टेशन सेटल योर अफेयर्स या मशावरत के साथ करें। ठीक। तो अगर हम रहनुमाई कुरान शरीफ से लें और अमेरिकन केसेस से ना लें, ठीक, और अगर मैंने तो खुद ही अपने आप को कह दिया कि मैं मुशावरत करना चाहता हूँ, मैंने अपने दोनों कोलीग से मुशावरत कर ली और बड़ी खूबसूरत सी से हुई, हमारा कोई ये ना समझिए कि 2-1 कोई आ रहा है, हमने बाई कंसेंट से फैसला कर लिया, ठीक है, तो बड़ी खूबसूरती से हो गया। तो अगर ये कानून भी यही कह रहा है कि आप मुशावरत कर लें अपने जो उल्टे लोग बैठे हुए हैं उनसे, और ये तो हो गया वो वाला पहलू इसका कानून का कि बेंचेस वगैरह की तश्कील कैसे होना है। दूसरे पहलू हैं एक रिव्यू का, उस पर आपने कोई ख़ास बात नहीं की। तीसरा पहलू वो है अपील का, जिस पर आपने काफ़ी कुछ ज़ोर दिया है। तो एक और पहलू ये है कि अगर अहम आइनी कानूनी नुक्ते हैं तो 5 मेंबर बेंच बन जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा इसमें क्या बुरी बात है। और एक और है कि अगर 184(3) का क्योंकि हक अपील का नहीं दिया है, उन्होंने आर्टिकल 10A का भी जिक्र कर दिया है कि अपील का हक तो अल्लाह ताला भी कंडेम नहीं करेंगे, वो भी पूछेंगे। तो वो अगर एक अपील का हक मिल गया तो किसी को नुकसान, फिर वही आ जाती बात। अब मैं दूसरी उसको मद्देनज़र रख के कर रहा हूँ ये बात को, कुरान शरीफ को मद्देनज़र रख के, और हम जिनको समझते हैं मुसलमान के जो हम अपने प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात करें तो वो हर काम मुशावरत से करते थे। तो मुशावरत पे करने में कोई ऐसी क्या बात पार्लियामान ने हम पे हमला कर दिया बात आती है? कोई हम किसी के इख्तियार खींच नहीं रहे, मुशावरत करवा रहे हैं सबसे। मेरी सिर्फ बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, मगर इसको हम रहनुमाई ले सकते हैं कुरान शरीफ से। मैं कह रहा हूँ आपने ली 1980 में रूल्स बनाए तो सारों ने बैठ के मुशावरत नहीं, से ये बनाए। हमें नहीं पता, देखिए हमें नहीं पता मुशावरत हुई है नहीं हुई थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जी पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, आप जरूर करें, आपको करनी चाहिए, और आपके पास शायद वही बात आ जाती है ना, सब पावर अगर आपका मूड होता है आप पे, फिर ये मुझसे तो आप एक तरह से वो कर रहे हैं कि अगर आप बेहतर समझते हैं तो खुद कर लीजिए। पार्लियामान का कहना कि आप मुशावरत कर रहे हैं गलत है, मगर यही बात तो कुरान शरीफ भी कहता है। वो ये नहीं कहता है अगर चीफ जस्टिस समझते हैं मुशावरत कर लें, कुरान शरीफ पाबंद करता है कि मुशावरत करिए। मेरे ख्याल में आइन भी आपको पाबंद करता है, मैं बेहतर समझते की बात नहीं कर रहा, आइन आपको पाबंद करता है। आप इस इदारे के सरबराह हैं, आप पाबंद हैं कि इस इदारे को उस तरह से चलाएं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि वो पावर कोर्ट की है, आप अपने पास रखें। कोर्ट से इनफराद पे फर्क, आपने कोर्ट और इनफराद को दोनों को एक बयान करते हैं, मगर जिस तरीके से मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि दूसरे लोग नहीं शायद ये बात करें, मैं इसीलिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि अगर मैं कल किसी से नहीं मशावरत करूँ, अपनी मर्जी चलाऊँ, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है, कैसे? कर सकता है। आप आज तो आप तैयार है ना सर, आज आप फुल कोर्ट मीटिंग में ये तय कर दें कि जी कोई भी 3 क्यों करूं? नहीं सर, तो मैं अपने इख्तियार क्यों कम करूं? नहीं, तो अभी तो आपने सर खुद कुरान शरीफ का हवाला दिया। ये देखिए वो मेरी अपनी मर्जी वाली बात है ना। नहीं सर, मैं तो आपकी अपनी बात पे कर रहा हूँ। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए कानूनी और आईनी बातें हो रही हैं, मेरी मर्जी की बात नहीं है। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मैं नहीं करता हूँ, बस खत्म हो गई बात यहाँ। नहीं, मैं तो मशवरे के बाद भी ये बात कह देते कि नहीं करता हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सर जरूर करें। मैं ये कह रहा हूँ सर कि और का कहना कि आप मशावरत करो ये बुरी बात है, आपका ये बुनियादी बात है। आज वो ये कह रहे हैं तो कल जो बात करेंगे जो इतनी खतरनाक होगी, यकीनन आप जैसे वकील आएंगे और हम उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। और मैं उससे ऊपर वाले एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी की कर रहा हूँ, जिसमें आइन शुरू ही होता है उसी बात मैं भी उसी पे कर रहा हूँ सर। आप पे पाबंद है, आप सबके साथ बैठ के मुशावरत करें, और ये आपने एक चीज जो और में जो इस कोर्ट से वॉइसेस आई के सिस्टम को रिफॉर्म करें सर। माय लॉर्ड जस्टिस मंसूर अली शाह का सेपरेट नोट आया, SMC 1, जस्टिस अतर मनेला का आया, आपका आया। आप सब ने कहा कि हम 191 के नीचे रूल्स चेंज करें। तीनों में जो फुल बेंच की जजमेंट है 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, उसमें कहा कि रूल्स के थ्रू करें। आपने तो अपने ऑर्डर में नहीं लिखा कि पार्लियामेंट को बना दे। इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, तो अब करें ना। अब क्या रोका हुआ है? भंडारी साहब 15 बैठे हैं, भंडारी साहब इसको इस तरह कर लेते हैं, साइड पे कर दे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको इस तरह कर लेते हैं भंडारी साहब की एक्ट भी रहे, जो बकाया रह जाए वो हम रूल्स में देख लेते हैं, जो काम रह जाए रूल्स में करें। सर आप सारा कुछ रूल्स में ही लिखें सर, मेरी गुजारिश है। केसेस की फिक्सेशन का भी लिखे, कॉज लिस्ट का भी लिखे। कॉज लिस्ट सर सैटरडे को इशू है, हमें पता ही नहीं होता सैटरडे तक, ना कोई पर्सनल कमिटमेंट ना कोई प्रोफेशनल। 1 महीना पहले कॉज लिस्ट इशू करें, चीफ जस्टिस की मर्जी है जब इशू करें। सर मैंने तो चीफ जस्टिस को भी लिखा है सर, मेरा खाता है। उनकी मर्जी। भंडारी साहब, ये एक हम जरा मुशावरत आपस में कर रहे हैं कि इसको हम आज ही चलाएं या किसी और तारीख को रखें। भंडारी साहब, हम चाहेंगे और तवक्को रखते हैं कि जब आपकी पार्टी, पटिशनर की पार्टी पार्लियामेंट आए, वो न सिर्फ पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाए, हमें भी अगर कोई गलती है वो भी दुरुस्त करे, लेकिन वो पार्लियामेंट करे। माय लॉर्ड, मेरा सर्टेनली यही मशवरा होगा। योर लॉर्डशिप कैन हैज माय वर्ड ऑन इट प्रोवाइडेड आई एम कंसल्टेड। ग्रेटफुल। आज क्या ट्यूसडे है ना, तो हमारी लिस्ट निकल, किधर गए वो? आइए अटॉर्नी जनरल, आप किधर चले गए? हाँ, कल की लिस्ट इशू हो चुकी है, तो किस दिन रखें? परसों? परसों कौन सा दिन है? जुमेरात? हाँ, की भी हो चुकी है। जुमे को रख लें इस केस को। My lord, if the cause list has been issued, if the cause list entire week has been issued and नहीं तो कम से कम उन लोगों को पता तो चल जाएगा ना जुमे की, अब वो आ चुके हैं। Alternatively, है ना, उसकी आवाज़ उठाए ना, मशावरत हमसे करें ना। मंडे को रखने पे alternatively नहीं, आप तैयार हैं तो मतलब काफी, शायद आप भी थक गए होंगे या नहीं थके हैं, तो बताएं, आप तो नौजवान हैं। मैं तो ठीक हूँ। I think we have there are 3 other councils on this side. I don't know if the petitioners have concluded or not. वो सिर्फ राइट ऑफ रिप्लाई Petitioners have concluded that not राइट ऑफ रिप्लाई की बात not आप किसके लिए हैं? My lord, this is the sole petition भाई किसके लिए हैं आप? for the petitioner. We have also impugned it. यकीनन आप petitioner के लिए होंगे, नाम बता दें। Number 33. उसका नाम है नंबर 33। Umar Sadiq versus Federation and I'm Adnan Khan, my lord. I'm Adnan Khan. अच्छा ठीक है, कितने देर बाद बहस करेंगे? My lord, 30 minutes will be more than नो enough for नो me. आपको हम नहीं देंगे 30 मिनट, कोई नई बात करें, इतनी बात My तो सुन lord, चुके नई हैं। बात ही होगी। मेरे एक सबमिशन है। A bunch of these cases, this is the sole petition from a smaller provincial unit. From a smaller province, my lord. कौन सा small province है? कौन सा small province From the है? Khyber Pakhtunkhwa, my lord. Small है? My lord. And this solitary voice may not be silenced, my lord. We are the equal stakeholders in the system. So we at least. आप पाकिस्तान, आप खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? My lord, a legal practitioner, an individual. इंडिविजुअल को कर रहे हैं ना, Individual. तो कोई किसी और को तो नहीं कर रहे we हैं। can तो keep it for अच्छा Monday. डेट की बताएं जो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है। Monday को रख लें and नहीं, सुबह ही हम रखेंगे। tomorrow? हाँ? Monday or tomorrow? नहीं, क्योंकि मैं देखें, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो चाह रहा था आज खत्म कर लें। So Monday morning को फिर रखें, we conclude it on अब Monday. हम वकीलों को नाराज भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो मगर मंडे को बिल्कुल Monday को रखें and we conclude it on Monday. अच्छा मंडे को रात को अच्छा ये सोच लीजिए, आप आर्ग्यू करें रात को 12 बजे तक सर पहुंच अगर आप जाएगी। सवाल कम पूछेंगे तो हो जाएगा। अच्छा फेयर इनफ, ठीक है, आपसे यही तवक्को कर रहे थे। तो मंडे को एक ही केस लगेगा और हम फिर क्योंकि बाकी लिस्ट जारी हो चुकी है तो मंडे को इशू कर देंगे। हाँ
एजी साहब आप हमारे राइट ऑफ एक्सप्रेशन खत्म करना चाहते हैं? नहीं, अपना लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुशावरत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फिर आप ये लिख लें फिर। ठीक है, इस बात पे हम सब इत्तेफाक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लिखिए, वो लिख लीजिएगा वकीलों के नाम। हैव कंक्लूडेड द सबमिशंस। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अदनान खान। हाँ, डॉक्टर अदनान खान। अच्छा, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? ऑफ क्रिमिनल लॉ। हाँ, ऑफ क्रिमिनल लॉ। अच्छा, represents the petitioner in 3 of 2023 is the only person। अब आप वाहिद शख्स रह गए जो कि इस कानून को कहते हैं गैर आईनी है। Yes, my lord. Except for there is also my petition। बात तो खत्म करने देना, ऐसे तो ना करिए। Except for section 6 of the act। ठीक है, तो आप ही वाहिद शख्स हैं, कोई और भी है? My petition is 18। My petition is 18 number। तो फिर आप लोग बैठे खत्म करें आज कानून, कम से कम इनको फिर हम नेक्स्ट डेट सुनेंगे, क्योंकि आप तो फिर हमारा फायदा ये होगा कि अभी आप लोग थक गए, तो इसका मतलब है आप कम बहस करेंगे शायद। हम आप नहीं चाहते हैं आप फ्रेश हैं, दोबारा सारी बातें शुरू हो जाएंगी। तो बुनियादी आज ही हो दे तो ठीक है। आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए कितना लिखेंगे, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल खामोशी से सुनेंगे, और अगर कोई सवाल पूछे आप नोट करें, आखिर में बताइएगा। योर ऑनर, मुझे टाइम बताइए। योर ऑनर, माय पिटीशन ऑफ 2 pages और मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा। अच्छा, ये आप किसकी तरफ से हैं? I'm petitioner in person। अच्छा, ठीक है, 15 मिनट आपके के 15 मिनट। माय लॉर्ड, मैंने तो 30 की रिक्वेस्ट की है। 30 days 30 minutes। नहीं, आप 15 मिनट पे करें जी, सारी बातें हो चुकी हैं। Not और ये आप रह गए बाबिद साहब। हाँ जी, आप देखें, नहीं पे ऐसा करें, आबिद साहब आप पहले बात कर लें, क्योंकि आप शायद दलाइल देंगे, वो शायद आपके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर लें। पहले होता था लोग अडॉप्ट करते थे, वो हर आदमी चाहता है कि वो टीवी पे नजर आए। तो ये वो देखें, वो बातें जो हो गई हम दोबारा ना कीजिए, ठीक है? तो आप आबिद साहब को हम पहले सुनेंगे। और कौन है पीछे? पाकिस्तान पर आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं लॉ को, अपोज कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरफ होंगे, आप उस तरफ आएंगे ना, अटॉर्नी जनरल की तरफ। तो आबिद साहब रह गए और आप रह गए और आप रह गए, 3 लोग। मैं ज़मान खान वर्दक पिटिशनर इन पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 10। मैंने सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज? मैं इस लॉ को अपोज कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए रिटन अपने। हम उसको पढ़ लें, काफी है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं उसी पर कितनी मुनासिब बात की इन्होंने, हर चीज थ्रैश आउट हो गई। चलें, इनका नाम लिख दीजिए। हर्ड मिस्टर ज़मान खान वर्दक, who represents the petitioner in person, constitution who has filed who is a petitioner in person, having filed CP number 10 of 2023, states that whatever he has that he has made his submissions, he has made his submissions in writing, and those may be considered। ये देखें कितनी मुनासिब बात है। अच्छा, आप भी ये करना चाहते हैं? आपसे पूछें खैबर। नहीं, आप खैबर पख्तूनख्वा वाले वकील साहब। No, my lord। No, makes oral submissions, my lord। अच्छा, तो आप रह गए, इन तीनों के नाम लिख लें। आप और आबिद साहब, 3 लोग रह गए ना। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ और यू आर रिप्रेजेंटिंग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? Okay, so you are supporting or this law? ठीक है, then you 3 will argue on Monday first thing, ठीक है? Keep them precise. जरा आप let Mr. Abid Zubairi, because he represents an institution, argue first. हो सकता है आपकी बातें ये कर ही दें, ठीक है? मुनासिब बात है। और उसके बाद फिर हम अटर्नी, इस तरफ कितने लोग हैं? नहीं, आप बताएं, who are you all for? I'm for PM9, sir। And you are for Mr. Siddiqui? Sir, I'm for MQM। MQM. And you are for Mr. Zaid Ji? Okay, so these 3 are left. And Mr. Kamran Murtaza, who made a request today through video link, so if he wants to come, otherwise then they can hear it. So try to be as precise as possible, and I think Mr. Salahuddin, you have filed your concise statement. Mr. Siddiqui, have you filed something? Before the next one, sir। Agar, Mr. Zaid, have you filed? Because I was reading, didn't quite finish reading yours, but yes, you have filed something.
ठीक है, तो if anyone wants to file anything, please do so. It applies to everybody. But don't make it very long, just keep it more precise, that will be obliged. So now Monday, inshallah, and that should be the last day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Very grateful, sir.
खूबसूरत खता थी रही, खूबसूरत खता थी रही, खूबसूरत खता थी रही। जफरा कुछ जिम्मेवार थी न, तुझी पढ़ण में दिलचस्पी आ न, घर जे कमकार में का दिलचस्पी आ, आखिर तू कने जिम्मेवारी जो एहसास कंदे? हाँ, तुझो हिक भाउ आहे, नौकरी करे, घर हलाए, थोरो सोच। अमाणी ये छोटी चई मां गैर जिम्मेवार छो आया? हाँ तो केड़ी जिम्मेवारी पूरी कई आ? हाँ, अज ॾींहं ताईं त चङे लिंगे कॾहिं घर जो को कमकार कोन कयो अथई, न ॿारनि जो स्कूल। ॿारनि जो स्कूल छो वेन वारो नथो अचे छा? वेन वारो अचे थो, पर जेकॾहिं वेन वारो न आयो त तुंहिंजी सिहत ते कहिड़ो असर पवंदो? तुंहिंजे भाउ तोखे केॾा सॾ ॾिना,